perform this muscle twitch practical. So we will start off with the definitions, the twitch क्या है, graph किस तरह का होता है उसमें, और क्या-क्या steps होते हैं, and then we will move towards the practical कि उसके क्या steps हैं, किस तरीके से हम perform करते हैं, and I will show you the video afterward. So let's start with twitch. Okay. So when there is an action potential, the action potential जब generate होता है and it travels down to your motor neurons. So there is a muscle, and you know every muscle is supplied by the neuron. So when your action potential travels down the neuron and then it comes to the muscle, so it will result in a contraction of all the fibers of the muscles. So this is called the twitch. Means when your action potential travels from the nerve to the muscle, so there would be a brief or a long, it can be a brief or it can be a long contraction. जो वो contraction हो रही है सारे muscles fibers की, we are calling that a twitch. तो वो single भी हो सकती है, multiple भी हो सकती है. So आज की जो practical है, that is about a single muscle twitch. जिसमें हम एक simple stimulus देंगे और एक single twitch होगी. So there can be some single twitch as well as multiple twitches. So we will see कि simple muscle twitch में क्या होता है. So in simple muscle twitch, the contraction is generated by a single action potential. And अगर there is a single action potential और वो एक simple contraction करवा रहा है muscle में, तो that is called a simple muscle twitch. अगर there are multiple action potentials और continuous action potentials आ रहे हैं और multiple जिसमें वो contractions हो रही है, तो that will call you a multiple twitches. So लेकिन our practical is of single twitch. So this is about what is twitch. अच्छा, जो हम सिंपल मसल ट्विच करेंगे उसके 3 components हैं. Means when you give a stimulus to the muscle, there are three components, there are 3 phases through which a muscle goes through. तो उसमें जो 3 components है, सबसे पहला जो component है that is a latent period और उसको हम lag phase भी कहते हैं. The second phase is a contraction phase and the third phase is a relaxation phase. So there would come a latent period जिसमें हम देखेंगे आगे कि latent period में क्या हो रहा है, and then comes the contraction phase of the muscle जहाँ पे muscle contract करेगा, और the relaxation phase of the muscle would be relaxing. So we will start off with the latent period. मैं graph दिखा देती हूँ पहले. This is a graph basically जब हम action potential generate करते हैं, sciatic nerve को expose किया prop की और उसमें stimulus दिया और एक simple stimulus दिया, single stimulus दिया. जब single stimulus दिया तो जो muscle single stimulus से जो contract हो रहा है उसके जो phases हैं 3 phases, that this graph shows those all 3 phases. So you can see here this is the time on your horizontal axis, and this is the amount of the force, the tension that we are giving to the muscle. So see, you can see here this is a single stimulus that we are giving to the muscle. उसके बाद ये millisecond का जो एक period आ रहा है, that is your latent period. उसके बाद फिर एक contraction period आता है, and then comes the relaxation period जहाँ पे muscle relax हो रहा है. So we will see कि इन तीनों phases में क्या हो रहा है. So the first phase, which is the latent period, it starts when the action potential is generated. So it is a short delay period, which is about 1 to 2 milliseconds, and it starts from the time when the action potential reaches the muscle and until the contraction can be observed. See, you can see here कि contraction से पहले वाला जो phase है, यहाँ पे action potential generate हो रहा है
और ट्रेवल कर रहा है, दैट इज योर लेटेंट पीरियड. व्हाट हैपेंस इन लेटेंट पीरियड, this is the time that is required for the calcium to diffuse out of the sarcoplasmic reticulum and bind to the troponin, and then comes the movement of tropomyosin off to the active site and formation of cross-bridges. अच्छा, ये एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा कि उसमें कैल्शियम किस तरीके से रिलीज होता है साइटोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, एंड देन इट बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन, एंड ट्रोपोनिन जो है वो एक्सपोज करता है एक्टिव साइट्स को, एंड देन द ट्रोपोमायोसिन बाइंड्स एंड फॉर्म योर क्रॉस ब्रिजेस. और फिर एक पूरा फिनोमेना था विच यू हैव ऑलरेडी लर्न कि एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म में क्या हो रहा होता है. सो जो ये लैटेंट पीरियड है बेसिकली उसमें आपका जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो कैल्शियम डिफ्यूज आउट हो रहा है, जो टाइम यूटिलाइज हो रहा है, द कैल्शियम दैट इज डिफ्यूजिंग आउट फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड देन इट इज बाइंडिंग टू द ट्रोपोनिन, और पूरा जो एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म हो रहा है, दैट मैकेनिज्म इज हैपनिंग इन योर लेटेंट पीरियड. तो वो बिल्कुल मिली सेकेंड का टाइम होता है, 1 to 2 मिली सेकेंड, उसके फौरन बाद फिर कंट्रैक्शन होगी. ठीक है. सो व्हाट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर लेटेंट पीरियड, दैट इज द कैल्शियम is diffusing out of the sarcoplasmic reticulum, it is binding to the troponin, and the movement of tropomyosin is the movement of tropomyosin off the active site, and then comes the cross bridge phenomena. क्रॉस ब्रिजिंग होगी एक्टिन और मायोसिन की, एंड देन पूरा कंट्रैक्शन का जो एक्साइटेशन कंट्रैक्शन का जो पूरा मैकेनिज्म है वो होगा. सो द सेकेंड फेज इज द कंट्रैक्शन फेज, जिसमें muscle is contracting. The tension that is provided to the muscle, so the muscle will contract in your contraction phase. The third phase is your relaxation phase. What happens in the relaxation phase? It is this time for the muscle to return to its normal length. So we have 3 phases. What are those? The latent phase, where the calcium is releasing and binding to the troponin, and then your excitation contraction coupling mechanism starts. Then comes the second phase, which is the contraction phase.
दोबारा शेयर कर दीजिए प्लीज डॉक्टर जी ना, और माइक अनम्यूट कर दीजिए। तो ओपन करें पहले, पहले ओपन करें फिर आगे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कंप्यूटर ऑफ हो गया था अचानक। अच्छा, हम phases पढ़ रहे थे of the contraction. So we've learned the three phases. Those are the latent period, which is also called the lag phase. Second is the contraction phase. आवाज आ रही है मेरी? And third is the relax. यस, आवाज आ रही है। Achha. So this is the graph that is showing all the three phases. The first phase, which is the latent phase, and which is about 1 to 2 milliseconds, and comes the contraction phase, or the third one is your relaxation phase. So जब simple muscle twitch हम देते हैं, तो this is the graph that will form after the contraction. Now we will discuss the types of contraction that occurs in the muscles. So there are two types of the contractions. The number one is contraction in which force is given. Force hogi, but the length will not change. So we will increase the amount of the force, but the length of the muscle fiber will not change. First type ये होगी. जो second type है उसमें जो मसल की जो लेंथ होगी दैट विल चेंज, इट विल शॉर्टन. सो वी विल सी के वो दो जो कॉन्ट्रैक्शन की टाइप्स हैं वो कौन सी है. फर्स्ट में फोर्स जो है इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन मसल की जो लेंथ है वो ना कम हो रही है और ना ही ज़्यादा हो रही है. इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द फर्स्ट टाइप. द सेकेंड टाइप इज where the by giving the action potential and force, the length of the muscle fiber is changing. So number one is the isometric contraction. Iso means same and metric means length. So what happens in isometric contraction? When the tension in the muscle increases, when we increases the force to the muscle,
So then the length of the muscle fiber doesn't change. So when you increase the muscle force, but the fiber's length does not change, this type of contraction is called isometric contraction. As the name suggests, iso means same और metric means length. जो length है of the muscle fiber वो same हो रही है, even after giving the even after increasing the amount of the force to the muscle. So this is the first type of the contraction. अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या है? जो हमारे the muscles that are maintaining our body posture, that is the example, and the second example is the joints. The muscles that are working in stabilization of the joints, उसमें tension force increase हो रही है, लेकिन the fibers are not changing in their length. The second type is isotonic contractions. Isotonic contractions में क्या होता है कि the length of the muscle will change by giving force. So the muscle length changes while muscle tension remains relatively constant. So the force will be constant over here, and the length of the muscle fiber will change. So this type of contraction is called your isotonic contraction. और इसकी example क्या है? When you lift up the weights, so the amount of the force that is giving to the muscle, जो भी हम weight for example lift कर रहे हैं, तो the force that is giving to the muscle is same, लेकिन due to that force जो आपका muscle fiber है that is shortening, contraction हो रही है. weight lift करने की ये example isotonic contraction की है. So we have two types of contractions, isometric जिसमें length change नहीं हो रही है, isotonic जिसमें length change हो रही है. ठीक है? अच्छा, there is this phenomena called summation. What is summation? This is when you give two stimuli together. So if the two stimuli are delivered in a rapid succession, the second twitch will be greater than the first. उसमें add up हो जाता है. Summation का मतलब है the stimuli, the action potential that is given to the muscle. जो एक के बाद जो दूसरा हम stimulus दे रहे हैं वो first के साथ add up हो रहा है, and after adding up it is creating the greater amount of the force, the greater amount of the contraction of the muscle. This only occurs if repolarization is not coming. For example, if you have given एक muscle को हमने stimulus दिया, action potential generate हुआ, उसमें contraction start हुई, depolarization start हुई, muscle contract होना start हुआ, लेकिन repolarization phase से पहले दूसरा stimulus उसको दे दिया है. For example, muscle को. तो जो first stimulus है और जो second stimulus है, वो दोनों add हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो आपका रिस्पॉन्स होगा, जो contraction होगी, that will be greater. So the tension developed during the summation is considerably greater than during the single muscle twitch. Clear? Acha. This was the brief introduction about the what is twitch and what is simple muscle twitch, and the phases of muscle contraction. जिसमें तीन है, जो ग्राफ बन रहा होता है उसके तीन फेजेस हैं, और फिर हमने एक ब्रीफली डिस्कस किया कि समेशन क्या है. So let's move towards the practical now.